Everyone, welcome to BYJU'S exam prep, most comprehensive preparation platform. So, tell me once whether the audio and video are absolutely fine or not. So, let me know whether the video and audio quality are absolutely fine or not. Yes. So, I think it is completely okay. So, good evening, and I hope that your preparation for the ESE Prelims is going good and you have completed all the non-technical part because we have taken the marathon session also for the non-technical subject and for the few technical subjects also we are taking the live classes. So now as you all know that you have to start because the advanced communication system is having a good advantage and we have to finish it within the next 2 to 3 hours. So we will revise the subject on the basis of the importance of the topic. So because each topic we cannot obviously cover because this is a almost 20 to 25 hours subject if we go. So we will try to revise it within the 10% of the overall syllabus. Okay. So yeah. So are you ready for the session? Because there are a few sessions which I am feeling that it is lagging. Yeah. So it is working good now. Yes, Madhura. Good evening, Pinky. Good evening, Jera. Good evening. Good evening, Anil. So before starting the session, just a brief introduction about myself. If you are not aware that I'm having more than 12-year teaching experience and I have done MTech in the signal processing and I have done different PSU exam as well. And my area of expertise are electromagnetic theory for electronics and electrical, communication system for electronics, electrical, advanced communication system, signal system, etc. And now this is the BYJU'S exam prep rank predictor tool. So we are only 2 days away from this rank predictor tool, and you will be getting the more or less some rank your position in the gate examination. So the final answer key is about to come, the response rate is about to come, and you will come to know where you are lying, and accordingly you can plan for your next upcoming exam. So you just register here and the link is given in the description. And there is a UPSC ESE Prelims exam also. We are actually going to analyze the ESE Prelims. So because in the ESE we get the offline session of paper. So we will discuss almost every question of the ESE so that you can check your answers. And you can just guess what can be your cutoff to qualify the written exam, and accordingly you can prepare for the mains. And there, if you are preparing for the gate 24 or any of your friend is preparing for the gate 24, then what you can do is you can just go to this workshop where the Abhinav Negi sir will be telling you how to ace gate 24 in the first attempt. Even though if you are in the going to appear in the second time, then also this session is going to be very helpful for you. So first of all, that we are starting from the microwave communication, and what are the different frequency band in the microwave communication we have. So that is your HF band. Okay, that is your HF band, and it is having the frequency ranging from 0.003 to 0.03 gigahertz. That is in the gigahertz, and you can write it in the megahertz also from 3 to 30. And then this is 30 to 300. VHF is 30 to 300 megahertz. UHF is 300 to 1000 megahertz, or you can say zero point 0.3 to 1 gigahertz. Then there is another band which is known as L band, which is ranging from 1 to 2 gigahertz. S band, that is 2 to 4 gigahertz. C band, that is 4 to 8 gigahertz. X band, 8 to 12 gigahertz. KU band, 12 to 18 gigahertz.
and K band 18 to 27 and Ka band 27 to 40. And millimeter band is 40 to 300 gigahertz and some millimeter is greater than 300. So you should know the frequency band because the question of uh, the type of the question asked in this particular microwave frequency band is which one of the following is representing the C band. Okay, suppose they will ask you to identify the C band if they give the four options. So you should know which is the correct option and which is the correct frequency range for the C band. Similarly, for any one of the band, they can give, or there is an alternative question that they can give you the match the list one and the list two. In the list one, they will give you all the frequency band name, and in the second, you will get the frequency range. So you have to match. Then you will only be able to match this if and only if you know how to what is the exact frequency range. Okay. So second thing which is important about the microwave communication is the layer of Earth atmosphere. So the Earth atmosphere is divided into the separate region. There are three separate regions. First is your troposphere, second is your stratosphere, and third is your ionosphere. So this is the troposphere which is ranging from 0 to 12 kilometer, and stratosphere which is from 12 to 50 kilometer, and ionosphere is above that, which is your 50 to 80 and 80 to 700, and after that we have the exosphere. So what happens in the troposphere actually? Because again there is a question from the troposphere that which in which kind of application it will be used. Okay. So the troposphere is the portion of the Earth atmosphere that extends from the surface of the Earth to a height about 6 kilometers at the North Pole or the South Pole and 11.2 kilometers from the at the equator. So it is ranging about 6 to 12 kilometers. And here you can see we have already seen tell that this 0 to 12 kilometer it is the troposphere, and where it is used mainly to tell the weather forecasting. So virtually all the weather phenomena take place in the troposphere. So the temperature in this region decreases rapidly and the altitude cloud forms. With the altitude, it decreases rapidly. As you go above from the Earth's surface, the temperature decreases rapidly and it forms the cloud. This is the region where the cloud is formed, and there may be much turbulence because of the variation in the temperature, density, and pressure. And the troposphere in an homogeneous dielectric medium whose refractive index varies with height, and so also the velocity of the wave. Okay, what about the stratosphere? The stratosphere is located between the troposphere and the ionosphere. It extends at a height of about 10 to 50 kilometers and the from the Earth's surface. The average height is, however, 40 kilometers. At the poles, the stratosphere starts at about 80 kilometers, or sorry, 8 kilometers, and so it is nearest to the poles. The lowest layer of the stratosphere are colder, and as you move upward, the upper layer becomes hotter. So this is different from the troposphere and the other layer of atmosphere, where the temperature falls with the increase in height. Okay, so here there is a temperature inversion. So in the stratosphere, there is a one phenomena called temperature inversion, because as you increase the height, the temperature actually what happens with the temperature falls with the increase in height, means it is from the hotter to the colder side. Okay, on the other hand, in the troposphere you saw that when you increase the height, okay, that the temperature decreases. That means it becomes colder, and here it is colder to hotter.
Now, stratosphere is a very calm and a stable layer, unlike the troposphere, because we have said that in the troposphere we have much turbulence, but the stratosphere is very calm and a stable layer, which is having a very less turbulence. So this layer is calm and stable because of the absence of any vertical air current. The reason for this is that the vertical air current flows from the warmer layer to the colder air. Here we are moving from the colder to the warmer air. And stratosphere is the region where about 90% of the ozone is formed. So ozone is a gas that is formed by the action of the sun rays on the oxygen present in the stratosphere. Of ozone is important as it absorbs the harmful UV rays from the sun, and UV rays destroy the human cells and are harmful to the life on earth. So thus the stratosphere supports life on the earth. So yeah, you will get the PDF in the Telegram group of the BYJU'S exam prep. So the Telegram group is given in the comment section and the description as well. So you can download that, and I will share this particular PDF with you. Okay. So in the stratosphere, the ozone layer is formed. So remember this point, and the temperature inversion is occurred in the stratosphere. So there is second important point about the stratosphere, and in the troposphere, which is very nearest region from the Earth surface. It is very nearest region from the Earth surface, right? Okay, now coming to the ionosphere, the ionosphere extends upward from the about 31.1 miles, 50 kilometer to a height of about 250 miles, that is 402 kilometer. The nature of the ionosphere is dynamic, and because it consists of ionized particles. So because it consists of ionized particles, the ionosphere is dynamic. Ionosphere has a different structure during the day and the night. During the night time, the layer of the ionosphere becomes very thin because the particles that were previously ionized because of the effect of UV rays. So because of the effect of UV rays, the particle gets ionized, and the layer become thick. But in the night time, when there is no sunlight, that particular ionized layer is not ionized, means that particle ions are not ionized, and hence the layer become thin. So satellites that are in the Earth orbit near near the border of the ionosphere, is near to the border of the ionosphere, and this essentially entails that as the dynamic nature of the ionosphere makes shifts in the condition of the layer, it will in turn affect the orbiting satellite. It will in turn affect the orbiting satellite. Now coming to the layer of atmosphere, the ionosphere is critical to the functioning of the EM wave, and especially in the case of the skywave propagation. And these wave propagation play a significant role in the communication and broadcasting the channel used. Changes in the structure of the ionosphere can cause the disruption in these channels. Earth climate condition can induce EM waves to breach into the ionosphere. When such an event happens, it can affect the overall structure of the layer. NASA satellites gather the data referring to the changes in the layer due to the pressure induced by these factors. As the layer comprises the electrically excited elements, it has its own unique reaction when the exposed to the UV and to the changing electromagnetic of the expand. So as such, there is no important point in this particular slide. Okay.
So we have learned about the three main layers, that is the troposphere, stratosphere, and the ionosphere. In the troposphere, which is very nearest to the Earth surface, where all the weather phenomena occurs, and it is about 12 kilometer, and then from 12 to 30, 50 kilometers, we have a stratosphere, and in the stratosphere, there is a temperature inversion occurs, and there is a ozone layer formation in the stratosphere, and then we have the ionosphere where the most of the communication occurs. And ionize, why the name is given as the ionosphere, because the ions are ionized by the help of the UV rays of the sun, and in the night time there will be a very thin layer because there is no sunlight, so the ions will not be ionized by the sunlight, and hence the layer becomes thin. Okay, got it? Okay, now, yes. So now the mode of propagation. What are the different mode of propagation? We have learned that what are the different layers in the atmosphere. Now let's understand what are the different mode of propagation. So there is a transmitter earth station. This is your transmitter, and this is your receiver. This can also be the receiver. So when we transmit the signal, this transmitter can directly send the signal to the receiver, and that will be known as the space wave propagation. And the transmitter will transmit the signal, and it can go to the ionosphere, and from the ionosphere it will reflect to the receiving earth station, and there can be the reflection from the earth surface. So the wave which is close to the earth surface is called the surface wave propagation. So it will be close to the earth surface. Okay, then when we transmit the signal, there should be a line of sight. Okay, and then this transmitted signal will transmit from the earth station, transmitting earth station to the receiving earth station. Now, the ground wave is composed of the two separate components, and they are known as surface wave and the space wave. So actually, the ground wave propagation has the two components, which is your space wave and the surface wave. Space wave, the direct propagation should be there from the transmitter to the receiver, and the surface wave, which is the reflection from the surface of the earth. So a surface wave travels along the surface of the earth, a space wave travels over the surface of the earth, and the ground wave propagation is limited up to the 2 megahertz, that is medium and long waves is used for the AM broadcasting and ship to ship communication. The waves are guided by the surface of the earth, okay, and the propagation take place, hence called the surface wave propagation along the curvature of the earth. Ground wave at the low frequency, earth behaves like a good conductor, and the horizontally polarized wave are short circuited. So this is important. Okay, all the waves which are horizontally polarized will be cancelled because of the Earth's surface, which behaves as a good conductor. So we know that the tangential component of electric field should be same, and inside the conductor the electric field is zero. So that is why the tangential component which is traveling, the electromagnetic wave which is traveling around the surface of the earth will have the two component, horizontal and the vertical, and the horizontal component will get cancelled because of that earth surface conducting medium, because it is actually working as a good conductor. So the tangential component will be zero, and hence only the vertical component of electromagnetic wave exists, and that is why it is known as vertically polarized, or the antenna that you have to place at the earth surface will be the vertically polarized.
So the range of propagation is around 100 kilometer, but if similar transmission is used in the sea, the range can be increased because of the saline water, which is very conductive. Hence, it is preferred for the ship-to-ship communication. Okay. Now, if you talk about the ground wave, so what should be the electric field strength? That the electric field strength for the ground wave propagation is 120 pi ST into lambda d. The live session duration is about 2 hours. Tejendra, it will be around 2 hours, 2 to 2.5. Okay. So the field strength at distance from the transmitting antenna due to the ground wave calculated by the Maxwell equation, which is 120 pi st hr is upon lambda d, and hr is the effective height of the transmitter and receiver, and is is the antenna current. Lambda obviously the wavelength of the signal to be propagated, and d is the distance between the transmitter and the receiver. And the field strength for the flat surface is E naught A upon D, where E naught is the ground field strength which we have calculated, and A is the attenuation factor. Now, what is the reasons of the attenuation in the ground wave? What are the different reasons of the ground wave? What are the different reasons of the ground wave attenuation? The ground attenuation, as the frequency increases, the attenuation of the earth also increases. Hence, this propagation is not possible after the 2 megahertz. Diffraction and the surface irregularity in between the propagation, there exist several obstacles, okay, which can lead to spreading of the wave due to the diffraction, as the strength also decreases, and wave front tilting due to the curvature of the earth. As the wave moves, it will be tilting, which will convert the vertical polarized to the horizontal polarized, and it will become short circuited. Okay, because of the earth curvature like this, there is a tilt. Okay, this tilt happens. Okay, this tilt, actually this is the wave, and there is a tilt like this. As it travels down, it is a tilt, and at one place it will get horizontally polarized, and when it is horizontally polarized, it will be short circuited. So always remember that we need only the vertical polarized wave. Surface wave. The surface wave reaches the receiving side by traveling along the surface of the ground, as shown in figure below. As shown in figure below, a surface wave can follow the contour of the earth because of the process of diffraction. When a surface wave meets an object and the dimension of the object do not exceed its wavelength, the wave tends to curve or bend around the object. The smaller the object, the more pronounced the diffraction action will be. So this is the transmitter, this is the receiver, and there will be a direct transmission, and the reflection can be around the earth surface. As the wave passes over the ground, the wave induces the voltage in the earth, and the induced voltage takes energy from the surface wave, thereby weakening and attenuating the wave as it moves away from the transmitting antenna. To reduce the attenuation, the amount of induced voltage must be reduced, and this is done by the vertically polarized wave that minimizes the extent to which the electric field of the wave is in contact with the earth. When a surface wave is horizontally polarized, the electric field of the wave is parallel with the surface of the earth, therefore is constantly in contact with it. Therefore, it is constantly in contact with it. Okay, next is the surface wave. Again, there are a few more points about the surface wave. The wave is then completely attenuated within a short distance from the transmitting side. On the other hand, when the surface wave is vertically polarized, the electric field is vertical to the earth and merely dips into and out of the earth's surface. For this reason, vertical polarized is vastly superior to the horizontal polarized for the surface wave. So the wave which is reflecting from the surface of the earth, the vertical polarized antenna or the vertical polarized wave should be used.
The attenuation that the surface wave undergoes because of the induced voltage also depends on the electrical properties of the terrain over which the wave travels. The best type of the surface wave is one that has the good electrical conductivity. The better the conductivity, the less the attenuation. Now we have the space wave. The space wave propagation will have the two types. One is the direct path and the reflected path. So basically the ground wave propagation is divided into the two types. First is your surface wave and the second one is your space wave. And the space wave also travel through the direct line of sight, that is from the transmitting antenna to the receiving antenna, and the wave can also travel from the reflection from the earth. So as you can see, there is a direct path and the reflected path. So when you transmitted the wave, that directly travels from the transmitting antenna to the receiving antenna and reaching to the receiver, and it may reflect from the earth surface. So there will be a fading effect in the space because both the waves are reaching at the receiver at a different time. So there will be a fading effect. So the space wave follows the two distinct paths from the transmitting antenna to the receiving antenna, one through the air directly to the receiving antenna and other to the reflected from the ground to the receiving antenna. The primary path of the space wave is directly from the transmitting antenna to the receiving antenna. So the receiving antenna must be located within the radio horizon of the transmitting antenna because the space waves are reflected slightly even when they propagated through the troposphere. The radio wave horizon is one third farther than the line of sight, and although space wave suffer little ground attenuation, they nevertheless are susceptible to the fading. Okay, this is because of the space wave travels through the two different paths. One is the direct path, and the second one is the reflected from the Earth surface. If these two components are in phase, then the result is a reinforced or stronger signal. Likewise, if they are out of phase, then they tend to cancel each other, which results in a weak or the fading signal. Weak or the fading signal. Now coming to the sky wave, because sky wave propagation means it will reflect from the ionosphere. So the propagation of the space and the ground wave are limited by a curvature of the earth, and hence these modes of the propagation fails for the communication over a larger distance. So for the long distance propagation, sky wave or ionosphere are used. The sky wave are reflected from the some of the ionized layer of the ionosphere and return to the earth either by the single hope or the multi hope. Okay, it may be possible that when you transmit the signal, it will directly go into the ionospheric layer and it will reflect from that particular layer, or it may take the multi hope, means it may take the reflection from other direction and again it will go back to the surface and then reflect from that particular surface and then it will come back to the receiver. How many question solve? How many question means in the today's session, or how many questions we are going to solve? Are you asking that? क्योंकि हम लोग यहाँ पे थ्योरी रिवाइज कर रहे हैं, है ना, हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे रिवाइज नहीं कर रहे हैं. So skywave follows the different path in the ionosphere and the receiving point. The receiver signal is the vector sum of all. So the fading occurs, which is minimize the AEC or the divergence. This is a theory session. I am not going to solve any question today. This is a theory session, okay? Because we have already, है ना, मतलब आप बोलो क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट अभी हम लोग रिवाइज कर रहे थ्योरी को, आप इसके बाद जाके क्वेश्चंस को लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर के, या फिर कोई भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन आप देख सकते हैं, आपको वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल जाएगा. आपको यहाँ पे रिविजन इंपॉर्टेंट है. ओके, सो अब आ जाते हैं हम लोग आइनोस्फीयर के कैरेक्टरिस्टिक्स पे. सो द एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आइनोस्फीयर, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
अगर आपको कैलकुलेट करने बोलता है फॉर द आइनोस्फीयर, देन दिस इज म्यू इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस 81 n अपॉन एफ स्क्वायर, where f is the frequency and the n is the number of electrons per cube. Number of electrons per cube. Okay, per cube meter, right? So the presence of electron in the atmosphere reduces the refractive index of the air, and the reduction is higher if the electrons are more. Next is skywave propagation, a type of radio wave communication in which the electromagnetic wave propagate due to the reflection mechanism from the ionosphere layer of the atmosphere is known as skywave propagation, and due to the propagation through the ionosphere, it is known as ionospheric propagation. In the ionosphere, the frequency is ranging from 3 to 30 megahertz. In the ionosphere, the frequency will be ranging from 3 to 30 megahertz. 3 to 30 megahertz, correct? 3 to 30 megahertz. So skywave propagation we have like this. So this is the transmitter. You will transmit the signal. It will go up to the ionosphere, and it should bend. So it should follow this path A. So it will bend from the ionospheric layer, and then it will reach to the receiver. So this is the transmitter. This is the transmitter, and this is the receiver, and this is your actual path A. But actually, if it is not सपोज करो कि यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, इफ इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड, then it should go directly up to this region, means it should penetrate all the layers, and it should go up to that point D, and then it should reflect like this. So that is your virtual path or virtual height from the earth surface to this particular point D is the virtual height, and which is lower edge of the ionosphere. So here we have the for few terms, which is the critical frequency. The critical frequency of the ionosphere is defined as the highest frequency which can be reflected by a particular layer at the vertical incidence, and this highest frequency is called the critical frequency for that layer, and it is different for the different layer. It is usually denoted by Fc. How do you calculate that critical particular frequency? The critical frequency of the layer is proportional to the square root of maximum electron density. So how do you calculate this? This for the angle of incidence is 0. Okay, for the angle of incidence 0, we get the maximum density, and when mu I is 0, mu is also 0. So 1 minus 81 n f equal to 0. So the n f will be 9 into root n. So this is your critical frequency. So very important formula again, the critical frequency. So we have got the two formula, the refractive index formula in the skywave propagation, which is mu is equal to root over 1 minus 81 n upon f square, and the second one is the critical frequency which we get when the refractive index will be 0, because the angle of incidence is 0. So the critical frequency Fc is equal to 9 into root over maximum index. Now the virtual height, as I told you that when the you transmit the signal from the transmitter, suppose करो कि वो ionospheric region में reflect नहीं हो रहा है, and it penetrates the ionospheric layer, then it will go straight and follow that particular path. So the distance that it follows is known as virtual height. Here you can see this is the transmitter. It will go up to the point D, and then it will reflect back to the earth station. So जहां तक ये आपका penetrate करेगा ionospheric layer को, that is your virtual height. तो ये virtual height है जहां पे ये virtually travel कर रहा है, but actual में तो ये ionospheric layer के different
रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होने की वजह से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगा पहले ही। बट अगर ये रिफ्लेक्ट नहीं होता आइनोस्फीयर लेयर से, तो वो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है और पॉइंट डी से रिफ्लेक्ट होके आता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल हाइट। ठीक है, or actual height, the actual path of the wave in the ionized layer is a curve and is due to the reflection of the wave in the ionospheric layer itself. What is the maximum usable frequency? So maximum usable frequency is almost same. The maximum usable frequency is a limiting frequency which can be reflected to the earth for some specific angle of incidence rather than the vertical. So अगर हम लोग वर्टिकल कर रहे हैं तो I इक्वल टू हम लोग जीरो करके कैलकुलेट कर रहे हैं, और I इक्वल टू जब आप जीरो कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है, और जिसकी वैल्यू आ रही है 9 इंटू रूट एन एम। तो अगर आपको मैं मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने बोलूंगा तो वो अदर देन एंगल ऑफ वर्टिकल इंसिडेंस होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग आपका वेव जो है वो मैक्सिमम कितने फ्रीक्वेंसी को यूज कर सकता है। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी फॉर विच, ये सारी चीजें हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, आइनोस्फीयर के लिए। सो द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ frequency for which the reflection takes place for a given distance of propagation is called the maximum usable frequency for that distance and for the given ionospheric layer. If the wave frequency is higher than that, the wave will penetrate in the ionized layer and it will not come back to the earth. So here you can calculate for angle of reflection जो होगा वो 90 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे नहीं पता। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको गिवन रहेगा फॉर गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन व्हाट इज द नंबर ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी व्हिच वी कैन यूज। सो म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन 90 था, एंड दिस इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस 81 एनएम इनटू मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। सो म्यू इज इक्वल टू साइन 90 1 हो गया, साइन आई आपके पास आ गया, एंड रूट ओवर 1 माइनस 81 एनएम अपॉन एफ एम यू एफ। एंड यहाँ से अगर हम लोग बोलें कि ये जो 81 nm है उसको अगर मैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखूंगा तो वो एफ सी स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ एम यू एफ स्क्वायर। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी इज सेक आई, ओके, सेक आई इंटू एफ सी। सो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो सेक आई से तो आपको मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी मिल जाता है, दैट इज द critical frequency and for the given angle of incidence. So this is again very important formula, maximum usable frequency. Is it clear up to this point? Is it clear? So this is the second law. This is known as second law, where maximum usable frequency sec I into fc and gives the maximum usable frequency which can be used for sky wave communication for a given angle of incidence. This equation can be applied safely up to the 1000 km. However, as the distance between the points is increased in a limit occurs due to the curvature of the earth where the path of the wave is tangent to the surface of the earth at these 2 points. What is the skyway propagation? The angle of incidence limiting up to the 74 degree for the F layer. For the F layer, it is 74 degree. Hence, the maximum usable frequency you can calculate for a given angle of incidence for a F layer is 3.6 times of FC. Suppose they ask you to calculate the maximum usable frequency for F layer, and for a given angle of layer, F layer, for a given critical frequency, then you can directly calculate maximum usable frequency as 3.6 times of the critical frequency. So these are the few formulas for the skywave propagation. The maximum usable frequency for the flat earth, this is again important for the flat earth, this is fc, critical frequency root over 1 plus d upon 2h whole square. D is the propagation distance and h is the height of the layer, okay, and fc is obviously the critical frequency. And for the curve earth, it is not actually very important because this is a lengthy formula and maybe it will not be used for the ESE. You may need some
few calculation time is there. So that is why I recommend you to remember only the formula for the flat earth, which is FC root over 1 plus d upon 2h whole square. Now, skyway propagation has another important property, that is the skip distance. So the distance at which the surface wave becomes negligible and the distance at which the first wave returns to the earth from the ionosphere layer, there is a some zone which is not covered by any of the wave, whether it is a ground wave or the sky wave. This is known as skip zone. So the area which is not covered by any of the wave is called the skip distance. So d skip is equal to 2h root over MUF frequency divided by critical frequency whole square minus 1. So again this is very important, skip distance. ठीक है, देखो कैसे होगा ये, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये पहला जो लेयर है, ये रे नंबर 4 है, ये एक पर्टिकुलर एंगल से इंसिडेंट हुआ, बट क्योंकि ये एंगल जो इंसिडेंट हो रहा है वो एंगल I4 इतना एंगल नहीं बना रहा है कि वो रिफ्लेक्ट होके वापस अर्थ पे आ पाए, तो ये आपका प्रोपोगेट हो गया, ये आपका आइनोस्फेरिक लेयर को क्या हो गया, पेनिट्रेट करके आगे निकल गया, क्योंकि हमको पता है कि मिनिमम वो एंगल बनना चाहिए जो क्रिटिकल, जो उसको रिटर्न करके अर्थ सरफेस पे पहुंचा सके। तो ये आपका जो थर्ड वाला रे है, यहाँ पे सेकंड वाला रे है, ये जो सेकंड वाला रे है वो आपका एक पर्टिकुलर एंगल से इंसिडेंट हो रहा है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपका रिफ्लेक्शन फ्रॉम द आइनोस्फेरिक लेयर, और वो आपका रीच कर रहा है कहाँ पे, अर्थ सरफेस पे। तो ये पॉइंट बी हो गया। और यहाँ से ये जो ट्रांसमीटर है, ये जो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन होता है वो एक शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है, तो यहाँ से वो इतने एरिया को कवर कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है जिसको हम लोग डेड जोन बोल रहे हैं, ये वाला एरिया किसी भी वेव के थ्रू क्या हो रहा है, कवर नहीं हो पा रहा है। तो इस रीजन को हम लोग डेड जोन, साइलेंट जोन या स्किप जोन बोलेंगे। और जो ओवरऑल डिस्टेंस है जहां पे आपका ट्रांसमीटर था और जब आपका पहला स्काई वेव रीच कर रहा है अर्थ सरफेस पे, उस रीजन को हम लोग पूरा का पूरा क्या बोल रहे हैं, स्किप डिस्टेंस बोल रहे हैं। ओके, एंड ऑप्टिमम वर्किंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो ऑप्टिमम वर्किंग फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम विजिबल फ्रीक्वेंसी होता है उसका 85% होता है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमम वर्किंग फ्रीक्वेंसी जो है वो आपका 85% ऑफ द मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी होगी। अब स्पेस में प्रोपोगेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला पे आता हूँ, है ना। यहाँ पे देखो जो डिस्टेंस है ना, ये वाला जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, अगर ट्रांसमिटिंग स्टेशन और रिसीविंग अर्थ स्टेशन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है स्काई वेव प्रोपोगेशन के लिए वो कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 4.12 इन ब्रैकेट रूट ओवर हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना प्लस रूट ओवर हाइट ऑफ द रिसीविंग एंटीना इन द किलोमीटर। ओके, इन द किलोमीटर, ये वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, ये कहाँ पे अप्लाई होता है, स्पेस वेव प्रोपोगेशन के लिए। जब आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, स्पेस वेव प्रोपोगेशन को हम लोग और क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन। तो जब भी आपको लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन बोलेगा या स्पेस वेव प्रोपोगेशन बोलेगा, एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसमिटिंग एंड द रिसीविंग एंटीना, then you can just apply the formula 4.12 in bracket root over ht plus root over hr. Is it clear? ठीक है, सो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ से सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करेंगे, इसके बाद आएंगे हम मोबाइल यानी कि सेलुलर कम्युनिकेशन पे, और फिर हम ऐसे करके हमारा डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो बताओ यहाँ तक क्लियर है, आपका एक पार्ट कंप्लीट हुआ, एक पार्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट में आपके पास टोटल 5 पार्ट है, एंड आउट ऑफ 5 पार्ट आपका एक पार्ट कवर हो गया।
चलिए, so orbital elements are the parameters which are helpful for describing the orbital motion of the satellite. Following are the orbital elements: semi major axis, eccentricity, mean anomaly, argument of perigee, and inclination and the right ascension of the ascending node. So these are the few important points. So first of all समझते हैं कि सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है. तो सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है आपका, जो, क्योंकि आपको कोई भी जो प्लेनेट है ना, या कोई भी सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड जो रिवॉल्व होता है वो कौन सा शेप लेता है, इलिप्टिकल पाथ लेता है. तो सेमी मेजर एक्सिस कौन सा एक्सिस हो गया, ये आपके इसमें दो फोकस होते हैं, है ना, ये इलिप्स में दो फोकस होंगे, और उसमें आपका ये वाला जो लॉन्गर जो डायमेंशन है वो आपका मेजर एक्सिस होता है, शॉर्टर जो डायमेंशन है वो आपका माइनर एक्सिस हो गया. तो लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस डिफाइन द साइज ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट एंड इट इज द हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस, and this runs from the center through a focus to the edge of the ellipse. So it is the radius of an orbit at the orbit's two important distinct point. ठीक है. सो ये इसेंट्रिसिटी हो गया, जिस पर्टिकुलर पाथ में आपका इसेंट्रिसिटी से ही आपको डिसाइड होगा कि कितना कौन सा शेप बन रहा है, और जो सैटेलाइट है वो जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है वो एक्चुअली कौन सा पाथ आपका बनाएगा, तो किस टाइप का पाथ बनाएगा, कितना उसका शेप उसका किस तरीके से होगा. दिस ऑल विल बी decided by this eccentricity. So eccentricity fix the shape of the satellite's orbit. This parameter indicates the deviation of the orbit's shape from a particular circle. अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 है तो वो सर्कल बनेगा, जैसे जैसे आप इसेंट्रिसिटी की वैल्यू बढ़ाते जाओगे ये आपका एक प्रॉपर इलिप्स का शेप लेते जाएगा, और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 तक हो सकती है. ठीक है. तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, जहां पे ए क्या चीज है, एक सेमी मेजर एक्सिस है और एक सेमी माइनर एक्सिस है. ओके. ओवरऑल मेजर एक्सिस जो होगा वो 2a होगा, और हम लोग यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे a और b हम लोग यूज कर रहे हैं. तो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए इज द फॉर्मूला फॉर द इसेंट्रिसिटी. The value of the eccentricity of a circular orbit is 0 since A and B both will be equal, and whereas the value of eccentricity of an elliptical orbit lies between 0 and 1. तो ये 0 भी नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए, हमेशा 0 से 1 के बीच में होना चाहिए. 0 में सर्कल हो जाएगा और 1 में भी ये प्रॉपर इलिप्स नहीं रहेगा, तो हमेशा 0 से 1 के बीच में होना चाहिए. Mean anomaly. For a satellite, the point which is closest to the earth is known as perigee. ठीक है. जो पॉइंट आपका सैटेलाइट के अर्थ के क्लोज होगा, सैटेलाइट जब अर्थ के एकदम क्लोजेस्ट पॉइंट पर होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरिजी, और जब सैटेलाइट आपका एकदम फार होगा फ्रॉम द अर्थ देन इट इज नोन एज अपोजी. So mean anomaly gives the average value of the angular position of the satellite with respect to the perigee. So perigee के रिस्पेक्ट में जो हम लोग एंगुलर मेजरमेंट करते हैं that is known as mean anomaly. If the orbit is circular, then the mean anomaly gives the angular position of the satellite in the orbit. But if orbit is elliptical, then the calculation of the exact position is very difficult, and at that time mean anomaly is used as an intermediate. Yes, you can just refresh it because the screen is absolutely clear. The screen is jacked up, absolutely clear. Okay. Now the argument of perigee, the satellite orbit cuts the equatorial plane at the two different points. That orbit descending node where the satellite passes from the north hemisphere to the south hemisphere. So ये आपका थ्योरी क्वेश्चन आता है ना, डिसेंडिंग नोड का, जब वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आपका कट करेगा, ठीक है, डिसेंडिंग नोड कहलाएगा, है ना, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर टू द साउदर्न हेमिस्फीयर. एंड असेंडिंग नोड कहलाएगा जब आपका साउथ से नॉर्थ की तरफ जब आपको कट करेगा ऑर्बिट इक्वेटोरियल प्लेन को दो पॉइंट पे, तो वहां पे असेंडिंग नोड कहलाएगा. आर्गुमेंट ऑफ पेरिजी इज द एंगल between the ascending node and the perigee. If both the perigee and the ascending node are existing at the same point, then the argument of perigee will be 0 degree. And argument of perigee is measured in the orbital plane at the earth center direction of the
सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट के डायरेक्शन पे, इन द डायरेक्शन ऑफ द सैटेलाइट मोशन, जिस डायरेक्शन पे सैटेलाइट आपका मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम लोग आर्गुमेंट ऑफ पेरिजी को मेजर करेंगे। और आर्गुमेंट ऑफ पेरिजी जो है बिटवीन द एंगल असेंडिंग नोड, असेंडिंग नोड क्या हो गया, जब साउथ से नॉर्थ की तरफ आप जाओगे तो जहां पे वो कट करेगा वो असेंडिंग नोड, एंड पेरिजी, पेरिजी के बीच का डिस्टेंस जो कि क्लोजेस्ट पॉइंट है ना, जो कि क्लोजेस्ट पॉइंट है फ्रॉम द अर्थ, है ना, जहां पे सैटेलाइट आपका सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पे है, और जब साउथ से नॉर्थ की तरफ आप जा रहे हो तो इक्वेटोरियल प्लेन जहां पे कट कर रहा है, ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा आर्गुमेंट ऑफ पेरिजी। ये देखो यहाँ पे, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाओगे तो ये आपका पेरिजी, और यहाँ से ये जो एंगल बना रहा है ये तो नॉर्मल इंक्लिनेशन हो गया कि ये आपका इक्वेटोरियल प्लेन है, और ये ऑर्बिटल प्लेन है। जो ऑर्बिटल प्लेन मतलब जिस प्लेन में आपका सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है वो ऑर्बिटल प्लेन हो गया, और एक इक्वेटोरियल प्लेन होगा, एक अर्थ का इक्वेटोरियल प्लेन होगा, उन दोनों के बीच के जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। So the angle between the orbital plane and the Earth equatorial plane is called the angle of inclination. तो ये I है. It is the measure at the ascending node with direction from east to north. ठीक है, east से north. So the inclination defines the orientation of the orbit by considering the equator of the Earth as reference. There are four types of orbit based on the angle of inclination. इक्वेटोरियल ऑर्बिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इक्वेटोरियल ऑर्बिट आपको थ्योरी में पूछता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इक्वेटोरियल ऑर्बिट मतलब क्या होगा, जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आइदर जीरो होगा या तो 180 डिग्री होगा, ठीक है, या तो जीरो होगा या तो 180 डिग्री होगा, ठीक। और पोलर ऑर्बिट क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा तो वो पोलर ऑर्बिट होगा। और आपका प्रोग्रेड ऑर्बिट क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 और 90 के बीच में होगा, ना ही 0 ना ही 90, जब 0 और 90 के बीच में, क्योंकि 0 होगा तो इक्वेटोरियल बन गया, 90 होगा तो पोलर बन गया, तो 0 से 90 के बीच में होगा तो प्रोग्रेड, और रेट्रोग्रेड कब होगा, जब वो 90 से 180 डिग्री के बीच। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो प्लेन और ऑर्बिटल, इक्वेटोरियल प्लेन और ऑर्बिटल प्लेन के बीच का जो एंगल है वो एग्जैक्टली अगर 90 डिग्री हो गया तो पोलर, 0 हो गया या 180 हो गया तो इक्वेटोरियल, और 0 से 90 के बीच में होगा तो प्रोग्रेड, और 90 से 180 के बीच में होगा तो रेट्रोग्रेड। तो ये आपका फॉर्म डेफिनेशन है इन सारे प्लेन के रिलेटेड टर्म्स का, ठीक है। Now the right ascension of ascending node. Ascending node is the point where the satellite crosses the equatorial plane while going from the southern hemisphere to the northern hemisphere. The right ascension of the ascending node is the angle between the line of Aries and the ascending node toward the east direction in the equatorial plane. Aries is also called vernal or equinox. Satellite ground track is the path on the Earth's surface of the Earth, which lies exactly below its orbit. The ground track of a satellite can several different forms depending on the values of orbital elements. देखिए अब ऑर्बिटल इक्वेशन क्या होगा, तो सिंपल कूलम्स लॉ, जैसे इसमें आपका एक फोर्स लगता है Gmm/r², दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि अब जब सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व हो रहा है अर्थ के अराउंड तो उसको एक फोर्स पुल करेगा, है ना, पुल करेगा बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरे प्लैनेट हैं वो उसको पुल करेंगे अपनी तरफ, ठीक है, वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ए सैटेलाइट व्हेन इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इट अंडरगोज द पुलिंग फोर्स फ्रॉम द सन एंड द मून, ठीक है, पुलिंग फोर्स फिर से लगेगा बिकॉज ऑफ द अदर प्लैनेट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब अर्थ आपको खींचेगा तो वो सेंट्रीपिटल है, दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए तभी आपका जो सैटेलाइट है दैट विल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। So mv square upon r should be equal to gmm upon r square। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि किस ऑर्बिटल वेलोसिटी से सैटेलाइट को मूव करना चाहिए अराउंड द अर्थ। सो v इज इक्वल टू रूट ओवर gm अपॉन r, ठीक है, रूट ओवर gm अपॉन r। तो ये पहले तो मास
of the satellite cancel हो जाएगा, तो it does not depend on the mass of the satellite. This capital M is the mass of the earth, G is the gravitational constant, and R is the radius. So the orbital velocity mainly depends on the satellite to the center of the earth, which is R. ठीक है, सैटेलाइट सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है वो है आपका R. Now another important property of, yes, another important topic of the satellite communication is Kepler's law. Another important topic is Kepler's law. Okay, Tejendra, are you getting? Now, the Kepler law of motion is always relative based on the energy of the particle under motion. The motions are classified into two types. Bounded motion. In the bounded motion, the particle has the negative total energy and has the two or more extreme points where the total energy is always equal to the potential energy of the particle. That is, the kinetic energy of the particle becomes zero. Now, unbounded, in the unbounded motion, the particle has the positive total energy E greater than 0 and has a single extreme point. In the bounded, we have the two extreme point, two or more, but in the bounded, unbounded, we have only a single extreme point and the total energy is equal to the potential energy of the particle and the kinetic energy of the particle becomes 0. So eccentricity is always between 0 to 1. Okay, and if it is greater than 1, then the E greater than 0 implies the boundary body has the unbounded motion. Kepler first law says that the every planet revolves around the sun in an elliptical path, whether it is revolving around the sun or whether the satellite is revolving around the earth, all will follow the elliptical path with one focus पे आपका सैटेलाइट होगा, है ना, यहाँ पे या तो अर्थ होगा या तो सन होगा, जिसके अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, या तो अर्थ के अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व करता है. ठीक है, सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट जो होता है ये आपका ये होता है पेरिजी, है ना, इसको हम लोग पेरिजी बोलते हैं. और जो सबसे दूर वाला जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एपोजी. और पेरिजी और एपोजी का डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ से हमारे पास देखो एक फॉर्मूला आता है इसेंट्रिसिटी को, ये मैं बोला था एपोजी और पेरिजी. फॉर्मूला आएगा पेरिजी का क्योंकि ये क्लोजेस्ट पॉइंट है, तो ये होगा a इंटू वन माइनस ई. सो a इंटू वन माइनस ई एंड पेरिजी जो एपोजी होगा जो दूर वाला है वो a इंटू वन प्लस ई, क्योंकि एपोजी जो है वो दूर वाला डिस्टेंस है तो इसमें वन प्लस ई हो रहा है, इसेंट्रिसिटी ऐड हो रहा है, और वहां पे वन में इसेंट्रिसिटी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और जब दोनों को आप ऐड कर दोगे एपोजी और पेरिजी को तो ये हो जाएगा 2a. ओके, और सेकेंड लॉ क्या बोलता है केपलर का कि फॉर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम जो भी प्लैनेट है या जो भी सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड जो रिवॉल्व कर रहा है वो इक्वल एरिया ही आपका कवर करता है. जैसे कि जब आपका जो सैटेलाइट है, इफ द सैटेलाइट कम्स क्लोजर टू द अर्थ, okay, then it moves with the very fast speed, है ना. So if it travels, like here you can see, if this is suppose the sun and the planet is revolving around the sun, then when it will close to the sun it will move very fast. So when it will move very fast, then it will cover the large area near to the sun, and when it is away from the particular sun, okay, when it is away from the sun, then it moves with the slower speed and hence it will cover less arc, and less arc means because the distance is more, so the area of this region, so let us suppose a1 and the area of this region both are same. So with respect to the time, the area is not going to change, so that is known as aerial velocity. So aerial velocity around the sun is constant and it swept equal area in equal time. Okay, so we get one formula which is
aerial velocity is equal to L upon 2m. This formula you can use, L upon 2m. L is the angular momentum and m is the mass of the satellite. Of if you are taking the planet, then now speed of planet at the perigee and the apogee, when the it will reach to the apogee and perigee, then what is the velocity? So the velocity is given by, because when it is close, it is having the higher speed. So that is about the perigee. We have gms upon a 1 plus e upon 1 minus e. 1 plus e I am having in the numerator because velocity जो है वो ज्यादा होना चाहिए, और जी एम एस अपॉन ए जो है वो कांस्टेंट है ना। एम एस जो है वो मास ऑफ द सन है, ये मास ऑफ द अर्थ हो सकता है अगर सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, देन इट इज द मास ऑफ द अर्थ एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ द प्लेनेट, जो यहाँ पे मास ऑफ द सैटेलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो g इंटू एम एस अपॉन ए 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, एंड वेलोसिटी अगर आप पेरिजी पे निकालोगे तो वो ज्यादा होना चाहिए, तो 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। एपोजी पे निकालोगे तो जी एम एस अपॉन ए तो आएगा ही आएगा, बट इट विल ऑल्सो मल्टीप्लाई विद द ये it will also multiply with the what 1 minus e upon 1 plus e. ये स्मॉल एम होना चाहिए, ऐसे मतलब होता है। एक सेकेंड, ठीक है, नहीं ए समझ गया ना, ए तो आपका सेमी मेजर है, जी एम एस अपॉन। नाउ केप्लर थर्ड लॉ क्या होता है कि the square of the periodic time of the elliptical orbit is proportional to the cube. So t square is directly proportional to the distance cube. T square is directly proportional to the distance cube, r cube. Okay, and the t is, which is time period proportionality constant अगर हम यूज करेंगे तो t square is equal to 4 pi square upon mu and r cube, 4 pi square upon mu into r cube. म्यू आपका केपलर कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू जो होता है वो 3.98 इंटू 4 बोल सकते हो आप, 4 इंटू 10⁻14। ठीक है, इसका म्यू का वैल्यू तो 4 पाई स्क्वायर, तो टी का वैल्यू आपको दिया रहेगा, डिस्टेंस आपको दिया रहेगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, और जो पी होता है वो 2 पाई बाई एन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल पीरियड। ऑब्वियसली 2 पाई बाई एन, जैसे कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई ए होता है, वैसे ही ये 10⁻14 है 4। ठीक है, एन इज द मीन मोशन। तो इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, केपलर लॉ को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल डायरेक्टली प्री में आ चुका है। तो ए क्यूब इज इक्वल टू म्यू अपॉन एन स्क्वायर। एन आपको क्या देगा, तो एन आपको मीन मोशन ऑफ द सैटेलाइट देगा। ठीक है, यानी कि ये एक तरीके से ओमेगा का काम कर रहा है। तो 2 पाई बाई ओमेगा इज टाइम पीरियड ना, तो अभी हम लोगों ने टाइम पीरियड यहाँ पे जो निकाला था ना, इसको आप ऐसा भी देख सकते हो, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई एन। ठीक है, एन आपका ओमेगा का काम कर रहा है, मीन एनॉमली या मीन मोशन बोल रहे हैं इसको रेडियन पर सेकंड में, और 2 पाई बाई ओमेगा इज इक्वल टू टाइम पीरियड होता है। तो ये जो टाइम पीरियड है, इसी को तो हम लोग बोले टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो यही जो टी है वो यहाँ पे हम लोग यहाँ लिख दिए, देखो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को आप यहाँ पे 4 पाई बाई टी लिखोगे, है ना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को 4 पाई स्क्वायर अपॉन म्यू लिखोगे, तो इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको ये रिलेशन ए क्यूब इज इक्वल टू म्यू अपॉन एन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ए की जगह आर बोल सकते हो आप, सेम डिस्टेंस है यही वाला आर। ठीक है, the importance of the Kepler's third law is that it shows that there is a fixed relationship between the time period and the semi major axis। a cube is equal to mu upon n square जो लिखे हो ना, that is this one, ये वाला। तो ये फिक्स रिलेशनशिप दिखा रहा है ना, a और n, टाइम पीरियड और सेमी मेजर एक्सिस के बीच में। नाउ कमिंग टू द ऑर्बिटल परम्यूटेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी आपको प्री में काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो ए सैटेलाइट मस्ट रिमेन इन इट्स ऑर्बिट वंस इट इज प्लेस्ड, है ना। एक बार अगर आप सैटेलाइट को ऊपर रख देते हो, मतलब प्लेस भेज देते हो, तो आप चाहते हो कि एक बार वो ऑर्बिट में आ गया है तो हमेशा उसी पे बना रहे। तो ए सैटेलाइट मस्ट रिमेन इन इट्स ऑर्बिट वंस इट इज प्लेस्ड
but practically there are many factors which can influence the सैटेलाइट ऑर्बिट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जब आपने भेजा तब तो वो वहां पे प्रॉपरली रिवॉल्व कर रहा है, बट कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि वहां पे कुछ आपको प्रॉब्लम देखने को मिले बिकॉज ऑफ द डिफरेंट रीजंस। तो पहला है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि दूसरे प्लैनेट्स भी हैं, तो बिकॉज ऑफ द अदर प्लैनेट आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो सैटेलाइट वहां पे प्लेस होगा ऑर्बिट पे, तो उसके के कारण सोलर एंड लूनर इक्लिप्स के कारण, सोलर रेडिएशन प्रेशर के कारण, एटमॉस्फेरिक ड्रैग के कारण, एरोडायनामिक ड्रैग के कारण एंड असिमेट्रिकल ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द अर्थ ऑब्लेटनेस के कारण। जैसे कि वन बाय वन देखें तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बाय द अर्थ एंड द मून causes the orbital inclination of the satellite with changes with the time. These forces will result in the satellite in increase in the orbital inclination from an initiation 0 degree at the launch to the 14.67। तो मतलब आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा चेंज हो सकता है। जहां पे वो 0 डिग्री का ऑर्बिटल इंक्लिनेशन था, ओवर द 26 years it can tilt around the 14.67 years. So this increase of the inclination can restored by using the north south keeping anywhere, and usually the life of the commercial satellite is not more than 26 years। और इक्लिप्स इफेक्ट हो सकता है अगर मान लो आपका जो सैटेलाइट है ना, उस पे जो ट्रांसपॉन्डर लगा है वो आपका बैटरी जो है उस पे वो चार्ज होगा किससे, सन रे से। अगर मान लो यहाँ पे इक्लिप्स हो गया है ना, सन यहाँ पे इक्लिप्स हो गया, सैटेलाइट इज सेड टू बी इन इक्लिप्स व्हेन द अर्थ और द मून प्रिवेंट द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग इट। मतलब आपका अर्थ अगर बीच में आ गया सैटेलाइट के, मतलब इस डायरेक्शन पे आ गया कि जो सनलाइट है वो अगर सैटेलाइट तक नहीं पहुंच पाएगा तो वो चार्ज नहीं हो पाएगा, सोलर पैनल जो ट्रांसपॉन्डर में लगा है उसकी वजह से उसकी वर्किंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो ए सैटेलाइट ड्रॉज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम इट्स हाउस कीपिंग विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल्स। सोलर इक्लिप्स आर इंपॉर्टेंट एज दे affect the working of the satellite because during the eclipse satellite receive no power in its solar panels. For a geostationary satellite, the solar eclipse due to Earth occurs during the two periods that begin 23 days before equinox and end 23 days after equinox. During equinox, that is the autumn and the spring season, the sun, earth and the satellite are in same phase and the time and duration of the lunar eclipse never remain fixed। द इंक्लिनेशन ये आप निकाल सकते हो, इंक्लिनेशन 17.4 का होगा मैक्सिमम, ये इस फॉर्मूले से निकलेगा 23.5 sin 2 pi t अपॉन t से, यहाँ से हम लोग 5 पहले निकालेंगे तो ये मैक्सिमम शेडो एंगल होगा एट इक्विनॉक्स। हालांकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम लोग को टोटल 21 डेज आपका लगेगा from the first day of eclipse to reach the equinox, and hence total 42 days over a year the eclipse affected the satellite's working। Effect of solar radiation pressure. Solar radiation pressure from the sun's ray perturb the satellite orbit and the satellite experience change in the eccentricity of orbit. The eccentricity builds up to the 6 months and then shrinks during the next 6 months. The small variation in the shape of the orbit may be tolerated for most of the missions। नाउ एरोडायनेमिक और एरो प्रेशर का जो ड्रैग है इसका भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि एरोडायनेमिक फोर्स किस डायरेक्शन पे लगेगा। तो 0.5 इंटू रो ए इंटू सी डी इंटू ए इंटू बी, इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको प्री में देखने को मिलेगा इस फॉर्मूले से, जहां पे रो ए है डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, सी डी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एटमॉस्फेरिक ड्रैग है और इक्विवेलेंट सरफेस ऑफ द सैटेलाइट, एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेयर। इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑब्लेटनेस ये वही है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा जो भी हम लोग निकाले थे, एनालिस्टिक पीरियड हम लोग निकालेंगे और ये एन नॉट सेम वही फॉर्मूला अगेन, रूट ओवर म्यू अपॉन ए क्यूब, वो हम लोग वहां पर क्या पढ़े थे, ए क्यूब इज इक्वल टू म्यू अपॉन एन स्क्वायर, तो उसी से ये आया है। यहाँ से हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार प्रीवियसली आ चुका है कि अगर मैं अर्थ के ऑब्लेटनेस को कंसिडर करूं, मतलब उसमें कोई चेंजेस को कंसिडर करता हूं है ना, उसके सरफेस पे कैसे चेंज आएगा, तो यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे कैसे लिखा है, अर्थ इज नॉट परफेक्टली स्फीयर है ना, देयर इज एन इक्वेटोरियल बल्ज एंड फ्लैटनिंग एट द पोल, दिस टाइप ऑफ शेप इज नोन एज ऑब्लेट स्फीयरॉइड। द अर्थ ऑब्लेटनेस हैज नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन द सेमी मेजर एक्सेस। ठीक है, तो ये अगर फॉर्मूला है एन नॉट जो कि ऊपर वाले फॉर्मूले से निकलेगा, एंड इन ब्रैकेट 1 प्लस k1 इन ब्रैकेट
1 minus 1.5 sine square I upon a square 1 minus e square to the power 1.5 bracket close. So this is overall formula for the earth oblateness when we want to calculate the mean motion. सैटेलाइट लिंक डिजाइन, ठीक है, सैटेलाइट लिंक डिजाइन पे आते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक। So satellite link design is defined as the earth station satellite and earth station connection. The earth station satellite the earth station मतलब satellite segment is called uplink. Satellite means satellite station segment is called the downlink. मतलब आपका क्या हो गया, सैटेलाइट से अर्थ स्टेशन तक जो ट्रांसमीटर अर्थ स्टेशन है वो अपलिंक हो गया, और सैटेलाइट से लेकिन डाउनवर्ड साइड पे जाओगे या नीचे की साइड पे जब जाओगे तो वो डाउनलिंक कहलाएगा आपका, ठीक है, रिसीवर अर्थ स्टेशन पे जाओगे तो, है ना। तो द डिजाइन ऑफ द सैटेलाइट लिंक इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट पावर दैट सैटेलाइट वुड बी एबल टू रिसीव फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू रिसीवर एंड पावर रिसीव्ड फ्रॉम द सैटेलाइट रिपीटर बाय द receiving earth station. In the satellite communication system, the transmitted and the received power calculation are the नोन एज लिंक बजट। हम लोग एक्चुअली सैटेलाइट लिंक बजट कैलकुलेशन में बेसिकली कितना पावर हमको लगेगा इसके बारे में हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर हम लोग कंसिडर करते हैं, कि जैसे सपोज करो कि एक आइसोट्रोपिक ट्रांसमिटिंग सोर्स है जो कि टोटल पावर ट्रांसमिट कर रहा है, रेडिएट कर रहा है पीटी, और उसका गेन है जीटी। ए रिसीविंग एंटीना विद द गेन जीआर एंड इफेक्टिव अपर्चर एरिया एई रिसीविंग पावर पीआर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस आर। So the flux density in the direction of antenna at a given distance r is F is equal to PTGT upon 4 pi r square। ठीक है, तो PTGT upon 4 pi r square जो होगा वो हमारा ओवरऑल फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, कितना पावर आप ट्रांसमिट कर रहे हो, पीटी किस एंटेना से कर रहे हो, कोई भी एंटेना होगा उसका गेन होगा, तो उससे मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल पावर जो है वो ट्रांसमिट होगा। अब आप क्योंकि ट्रांसमिट कर रहे हो तो आप फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट करोगे, है ना। तो वो फ्लक्स डेंसिटी कितना हो जाएगा, पावर पर यूनिट एरिया, तो दैट इज पीटी इंटू जीटी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। और जहाँ पे ये जो पीटी इंटू जीटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है इफेक्टिव आइसोट्रोपिक रेडिएटेड पावर। तो यहाँ पे जो फ्लक्स डेंसिटी हम लोग कैलकुलेट किए हैं उसमें पहला जो टर्म है ये आ गया पीटी जीटी, जो कि है आपका इफेक्टिव आइसोट्रोपिक रेडिएटेड पावर। तो कई बार आपको क्वेश्चन में ना सिर्फ इफेक्टिव आइसोट्रोपिक रेडिएटेड पावर कैलकुलेट करने बोलेगा, तो जस्ट कैलकुलेट पीटी इंटू जीटी। सो द पावर रिसीव कितना होगा, जितना पावर आपने ट्रांसमिट किया है मल्टीप्लाइड विद उसका इफेक्टिव अपर्चर एरिया। तो ये अपर्चर एरिया से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो पावर रिसीव आ गया। बट अगर मान लो वो जो रिसीविंग एरिया है उसका खुद का कुछ एफिशिएंसी होगा, तो जो अपर्चर एरिया है उसको हम लोग उसके एफिशिएंसी अपर्चर एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ईटा इंटू इफेक्टिव अपर्चर एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला आ गया पीटी इंटू जीटी इंटू एई विच इज इफेक्टिव अपर्चर एरिया डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। इसको अगर मैं डीबी में कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ से हमारे पास, अच्छा चलो पहले तो हम लोग इसको रिसीविंग एंटीना को सब जीटी जीटी में दिया है, ये इफेक्टिव अपर्चर एरिया को हम लोग रिसीविंग एंटीना, क्योंकि ये एई जो है वो रिसीविंग एंटीना का एरिया है, तो इसको रिसीविंग एंटीना के गेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या रिलेशन होता है गेन और इफेक्टिव अपर्चर एरिया में, तो गेन इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन लैम्डा स्क्वायर इनटू एई। तो इसको हमने सब्स्टिट्यूट किए तो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी पढ़ते हैं, विच इज नोन एज फ्रिस ट्रांसमिशन इक्वेशन। सो फ्रिस ट्रांसमिशन इक्वेशन क्या होता है, पीटी इंटू जीटी इंटू जी आर इंटू लैम्डा अपॉन 4 पाई आर का होल स्क्वायर। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड द रिसीविंग एंटीना। अब यहाँ पे पीटी इंटू जीटी तो ई आई आर पी है, तो ये वाला जो टर्म हो गया वो ई आई आर पी हो गया, और जी आर आपका गेन बच गया। और जो नीचे जो ये जो टर्म है इसको हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन लैम्डा को हम लोग पाथ लॉस बोलते हैं।
ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर को पाथ लॉस बोलते हैं। तो इसको अगर डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो वो पूरा का पूरा पाथ लॉस बन जाएगा। तो जो रिसीव पावर है वो ई आई आर पी इंटू रिसीविंग एंटीना का गेन डिवाइडेड बाय पाथ लॉस विच इज 4 पाई r अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर। अब इसको डीबी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो डीबी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 लॉग ले लेंगे। तो पहला ये ई आई आर पी आप यहाँ पे लिख लो डीबी में, फिर ये गेन लिख लो आप डीबी में, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हुए थे तो ऐड हो जाएंगे, और ये डिनोमिनेटर में था तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो लॉस है पाथ लॉस, उसके अलावा और भी लॉसेस हो सकते हैं, जैसे कि ट्रांसमिटिंग एंटीना का कोई लॉस होगा, रिसीविंग एंटीना का कोई लॉस हो सकता है, पोलराइजेशन लॉस हो सकता है, एटमॉस्फेरिक लॉस हो सकता है, प्री प्रेसिपिटेशन एंड क्लाउडनेस, क्लाउड के कारण एटेन्यूएशन हो सकता है। ठीक है, और डी पॉइंटिंग के कारण हो सकता है। तो वो जितने भी लॉसेस आपको मिलेंगे सैटेलाइट लिंक के डिजाइन करते समय, वो सारे लॉस को आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, है ना। तो ये जैसे ई आई आर पी आ गया, गेन ऑफ द रिसीविंग एंटीना आ गया, माइनस करके जितने भी लॉसेस आपको क्वेश्चन में दिए हैं सब लॉस कर दोगे, तो आपका पावर रिसीव्ड आ जाएगा। तो यही आपका क्या कैलकुलेशन है, लिंक बजट कैलकुलेशन है। अब इसमें हम थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं कि अगर मान लो कि कोई थर्मल नॉइज प्रेजेंट है तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो थर्मल नॉइज ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर देयर इज अ रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वहां पे हमको क्या देखने को मिलता है, थर्मल नॉइज देखने को मिलता है। तो पी एन इज इक्वल टू के इंटू टी एन इंटू बी, है ना। यहाँ पे के इंटू टी एन इंटू बी आ जाएगा, और के हो गया आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी हो गया आपका इक्विवेलेंट नॉइज टेम्परेचर, एंड बी हो जाएगा आपका व्हाट, बैंडविड्थ। अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नॉइस पावर, हमारा पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होता है, पावर पर यूनिट बैंडविड्थ। तो पी एन इज इक्वल डिवाइडेड बाय बी, पी एन इज इक्वल टू के टी बी हम लोग बोले थे अभी अभी, है ना। पी एन इज इक्वल टू के टी बी बोले थे, अवेलेबल नॉइस पावर था आपका थर्मल नॉइस के केस में, डिवाइडेड बाय बी कर दोगे तो पावर पर यूनिट बैंडविड्थ आपको क्या होता है, पावर पर यूनिट बैंडविड्थ हो जाएगा पावर डेंसिटी, और सिंपली क्या बोलेंगे, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। ओके, तो पी एन अपॉन बी यहाँ पे आ गया के टी एन। So noise temperature is directly related to the physical temperature of the noise source, but it is not equal to it. The noise temperature of the various source which are connected together directly to the can be directly given to the total noise. So here यहाँ पे आपका total noise फिगर अगर लिखना हो तो नॉइज फिगर क्या होता है, इनपुट सिग्नल टू नॉइज रेशियो डिवाइडेड बाय आउटपुट सिग्नल टू नॉइज रेशियो, है ना। अब यहाँ पे टेम्परेचर और जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर उसका रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंट नॉइज टेम्परेचर टीई और टीडी इज इक्वल टू टी नॉट इज इनटू एफ माइनस एफ वन। सो एन एफ माइनस वन मतलब नॉइज फिगर, नॉइज फिगर कैसे निकालते होता है। अब आ जाते हैं कैरियर टू नॉइज रेशियो। तो कैरियर कैसे है, नॉइज रेशियो तो नॉइज पावर आपको मिल गया, नॉइज पावर, और कैरियर पावर, कैरियर टू नॉइज रेशियो मतलब कैरियर पावर और नॉइज पावर का रेशियो। तो कैरियर पावर क्या हो गया, तो यहाँ पे देखो नॉइज पावर तो आपको पता चल गया, जहाँ पे ओवरऑल गेन जी है, देन द नॉइज पावर एट द डीमोडुलेटर आउटपुट। ओके, नॉइज पावर, okay, if the overall receiver gain is G, then the noise power at the demodulator output is Pn into G। ठीक है, तो पहले तो आपका नॉइस पावर आ गया, अब उस पर हम लोग गेन, कितने जितने भी रिसीवर होंगे सबका गेन है, उस गेन से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। और Pr इज द सिग्नल पावर रिसीव्ड, ठीक है, एंड देन द कैरियर पावर और द ओवरऑल नॉइस पावर Pr into G। तो ये कैरियर पावर क्या हो गया, जितना भी पावर आपका रेडिएट हो रहा था उसमें आप गेन का मल्टीप्लाई कर दो, जो आपका एंटीना है उसका गेन को मल्टीप्लाई कर दो, नॉइस पावर आपने निकाल लिया के टी बी। तो यहां से अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो रिसीव्ड पावर डिवाइडेड बाय के टी एन इंटू बी इज नोन एज कैरियर टू नॉइस रेशियो। so this is again a important one, this is again a important one। ठीक है, कैरियर टू नॉइज रेशियो आपको कभी कभी सेपरेटली पूछता है। तो कैरियर टू नॉइज रेशियो मतलब कितना पावर आपका रिसीव हुआ डिवाइडेड बाय के टी बी, यानी कि नॉइज पावर, पावर रिसीव डिवाइडेड बाय नॉइज पावर इज योर कैरियर टू नॉइज रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अब कितना पावर रिसीव हुआ था वो हम लोग फ्रिज ट्रांसमिशन इक्वेशन से लिख सकते हैं, पीटी जीटी जी आर इंटू लैम्डा अपॉन 4 पाई r होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका पावर रिसीव्ड डिवाइडेड बाय नॉइज पावर कितना था, के टी बी। ठीक है, तो के टी बी यहाँ पे लिख लिए। अब ये जो नॉइज है एन नॉट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को नॉइज पर यूनिट बैंडविड्थ। तो यहाँ से हम लोग अगर बी का डिवाइड करते तो ये बी यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, बोथ साइड अगर मैं मान लो बी का डिवाइड कर दूं या इस बी को ऊपर ले जाऊं
तो फिर ये इसके डिनोमिनेटर पे आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पास क्या आ गया, सी अपॉन एन नॉट आ गया, बी हट गया, बाकी सब कुछ वही है। टी एन को मैं सिस्टम टेम्परेचर भी कई बार लिख सकता हूँ। ठीक है, तो पी टी जी आर लैम्डा अपॉन 4 पाई r² के टी है। अब इसको डीबी में कन्वर्ट करेंगे तो ये ओवरऑल कैलकुलेशन हो जाएगा 10 log पी टी जी टू जो कि ई आई आर पी है, 20 log 4 पाई r अपॉन लैम्डा विच इज पाथ लॉस, एंड 10 log जी आर अपॉन टी एन विच इज ये आपका जी टू टी रेशियो है, गेन टू एंटीना टेम्परेचर रेशियो, एंड माइनस 10 log बैंडविड्थ। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल है। देखो ये बैंडविड्थ कहाँ चला गया, तो ये बैंडविड्थ आपका यहाँ पे चला गया, है ना। तो आप बोलोगे ये बैंडविड्थ कहाँ हट गया, तो ये बैंडविड्थ आपका कैरियर टू नॉइज रेशियो, क्योंकि हम लोग नॉइज पावर निकाले ना, तो नॉइज पावर में तो बैंडविड्थ आपका डिवाइड हो गया यहाँ पे, कैरियर टू नॉइज पावर बैंडविड्थ, ये एन अपॉन ये पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, नॉइज पर यूनिट बैंडविड्थ। तो ये है नॉइज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो कैरियर टू नॉइज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, अगर मान लो कैरियर टू नॉइज रेशियो बस बोला है तो आप बी को भी ले लोगे, और अगर पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी बोलेगा तो बी को आप सब डिवाइड यहाँ से हटा देना। ठीक है, तो पहला आपका टर्म क्या बन गया, ये वाला टर्म बन गया आपका ई आई आर पी, और जितने भी लॉसेस होंगे वो आप यहाँ पे कंसिडर कर लोगे पाथ लॉस, और जितना जी टू टी रेशियो होगा एंटीना गेन और टेम्परेचर का वो यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। एक बार बता दो यहाँ पे कंप्लीट है। यस, मोहित शर्मा। सो मोहित शर्मा ने बता दिया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे मोबाइल कम्युनिकेशन पे, है सेलुलर कम्युनिकेशन, ये हम लोग का लास्ट पार्ट है। तो इसके बाद हम लोग ऑप्टिकल पे जाएंगे। Cellular communication is designed to provide the communication between the two moving units or between one mobile unit and one stationary unit like a landline, है ना। एक आप मोबाइल से लैंडलाइन में बात कर सकते हो, दो मोबाइल के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम सेलुलर कम्युनिकेशन बोलते हैं। एक सर्विस प्रोवाइडर होगा जो दैट विल बी लोकेट एबल टू लोकेट यू, है ना, आपके कॉल को ट्रैक कर सकता है, असाइन करेगा कॉल जहाँ पे आपको, या चैनल असाइन करेगा जहाँ पे आपको बात करना है, एंड ट्रांसफर करेगा। अगर आप मूव करते हो तो वो जो बेस स्टेशन है उसको ट्रांसफर करने का काम करेगा, अगर आप आउट ऑफ द रेंज जाते हो। तो ये सारे पार्ट आपके सेलुलर कम्युनिकेशन में होंगे। ईच सेलुलर सर्विस एरिया इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल रीजन कॉल्ड सेल्स। हर एरिया में सेल्स होते हैं, उसमें आपका एक बीटीएस होता है, मतलब एक आपका एंटीना होगा जहाँ से आप पावर लोगे, है ना। तो यहाँ पे और बेस स्टेशन होता है। तो ईच सेल कंटेन एन एंटीना, हर सेल पे एक एंटीना होगा वो जो कि कंट्रोल होगा बाय द पावर नेटवर्क स्टेशन कॉल्ड द बेस स्टेशन। ईच बेस स्टेशन इज कंट्रोल्ड बाय द स्विचिंग ऑफिस। ओके, कंट्रोल्ड बाय द स्विचिंग ऑफिस। Controlled by the switching office and called a mobile switching center. So इस तरीके से हमारे पास सेल्स होते हैं, है ना। सभी सेल का शेप जो है वो हेक्सागन होता है। हेक्सागन होता है क्योंकि हेक्सागन का जो एरिया है वो लार्ज होता है, और हेक्सागन को अगर हम लोग एकोमोडेट करेंगे तो वो जो कॉम स्ट्रक्चर बनता है उसके बीच में कोई भी गैपिंग नहीं होती है। तो और स्क्वायर भी हम लोग यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो आप स्क्वायर
सेल भी यूज कर सकते हो ऐसा स्क्वायर स्क्वायर बना के। बट स्क्वायर बनाने से क्या है कि ये जो स्क्वायर है उसका एरिया वो कम एरिया को कवर करता है, लेकिन अगर आप कोई हेक्सागोन बनाओगे तो वो ज्यादा एरिया को कवर करेगा। तो विद द लेस नंबर ऑफ सेल्स यू कैन कवर द लार्जर एरिया विद द हेल्प ऑफ हेक्सागन। बट वही अगर आप स्क्वायर यूज करते हो तो सेम एरिया को कवर करने के लिए आपको लार्ज नंबर ऑफ स्क्वायर सेल लगेंगे, इसलिए हम लोग हेक्सागन लेते हैं। सेकेंड कि आप सर्कल नहीं ले सकते, क्योंकि सर्कल लोगे तो क्या होगा, आपका गैप बन जाएगा। हाँ, जैसे एडजेसेंट सेल को अगर आप सर्कल लेते जाओगे तो ये वाले रीजन पे अगर कोई यूजर पहुंच गया तो वहां पे गैप आ जाएगा, वहां पे कोई भी एंटीना उसको सिग्नल नहीं प्रोवाइड कर पाएगा और कनेक्शन जो है वो लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो पहला चीज है कि शेप जो है वो स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, बट आउट ऑफ ऑल दीज थ्री जो है हेक्सागन एक पर्टिकुलर एरिया, मतलब उसका क्योंकि ओवरऑल रीजन एरिया ज्यादा होता है तो इसीलिए वो लार्जर एरिया को कवर कर सकता है। ठीक है। और सारे एंटीना जो है वो एमएससी के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। एमएससी जो है वो आपका लैंडलाइन के थ्रू यहाँ से कनेक्ट होगा। मोबाइल स्टेशन, द मोबाइल स्टेशन कम्युनिकेट्स द इंफॉर्मेशन विद द यूजर एंड मॉडिफाई इट टू द ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल ऑफ द एयर इंटरफेस टू कम्युनिकेट विद द बेस स्टेशन service. The user information communicates with the NS through the microphone and the speaker, speech or the for the speech and the keyboard or display for short messaging and the cable connection for the other terminals. The mobile will have the two elements, एक तो डिवाइस आपका होना चाहिए, दूसरा सिम होना चाहिए, है ना। मोबाइल इक्विपमेंट एक हार्डवेयर होता है जो ऑब्वियसली हमको पता है, हार्डवेयर जो होता है वो ऑल कंपोनेंट्स होना चाहिए जो कि रिक्वायर्ड है एक प्रोटोकॉल इंटरफेस, प्रोटोकॉल टू इंटरफेस विद द यूजर एंड द एयर इंटरफेस। सिम का मतलब भी आपको पता ही है। base station BTS, base station the a base station transmits and receives the user data. When a mobile is only responsible for its user data transmission and reception, a base station is capable to handle the calls of the several subscribers the simultaneously, है ना। और base trans receiver station क्या होता है, BTS, the user data transmission take place between the mobile phone and the base station through the base transceiver or transceiver station. A transceiver is a circuit which transmits and receives. That is, it does both. Mobile switching center. The mobile switching center is the heart of the GSM network. It is an ordinary integrated service digital network, and one MSC can handle multiple BSC and interfaces with the other MSC. It also handles inter BSC handoff as well as the coordinates with the other MSC for the inter MSC handoff. It control calls to and from other telephony and the data systems such as the public switching network and the public landline mobile network. Yes, 83% will be covered by the hexagon. So coming to the important part, that is the frequency reuse technique. So that is the important part of this particular, mobile communication frequency reuse. So each cellular base station is allocated a group of radio channels to be used within a small geographical area called a cell. Base station in the adjacent cells are assigned channel groups which contain completely different channels than the neighboring cells. The base station antenna are designed to achieve the desired coverage within the cell. By limiting the coverage area. Yes, the EC student can do the MTech from the other branch like CS. Like you can do the masters in the data science also, artificial intelligence, machine learning, pattern recognition. All these are the branches where you can do the MTech, which is common for both EC and CS. The CS student can also take the admission. The EC student can also take the admission.
Okay, in the core area of the computer science, you cannot you cannot do the MTech because that requires the BTech degree in the CS. But there are few area which is common for EC and EE both, like computer technology in the IIT Delhi, that is also having common for open for both EE, EC and CS. Yeah, so we are using base station in the adjacent cell are assigned channel groups, so which contains the completely different channels than the neighboring cells. The base station antenna are designed to achieve the desired coverage within the cell by limiting the coverage area to the within the boundary of a cell. The same group of channel may be used to different cells that are separated from one another by the distance large enough to keep the interference level within the tolerable limits. सो एक सेल पे मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे हमारे पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, उन सारे सेल्स के पास एंटीनास होते हैं, है ना, और वो जो एंटीना है ना, जहाँ से वो सिग्नल लेगा वो सेम चैनल उनको असाइन करेंगे सभी सेल्स को, और वो सेम चैनल को आप रिपीट भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो दोनों जो सेल है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इतना होना चाहिए कि कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये ABCDEF हम लोगों ने 7 सेल यूज किया है इस पर्टिकुलर एरिया में, बट ये जो ए है और ये जो ए है इनके बीच में एक फिक्स डिस्टेंस है ना, तो ये जो डिस्टेंस है वो इतना होना चाहिए कि इनके बीच में कोई भी टॉलरेंस इंटरफेरेंस ना हो। तो यहाँ पे हम लोग ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है इसको हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये वाला जो डिस्टेंस है या ये जो डिस्टेंस है ना, डायगोनल और फिर वर्टिकल डिस्टेंस, फिर यहाँ से आप देखोगे तो ये सारे डिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो डिस्टेंस हो गया, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस यहाँ पे कितने सेक्शन आ रहे हैं, ये 1 2 3 ऐसा आएगा, और ये 1 और 2 कितना क्रॉस कर रहे हो वर्टिकली, ये हाफ सेल 1 हो गया और 2 हो गया, यहाँ से आप देखोगे तो कितना आ गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, है ना। The hexagon cell's shape is conceptual and is simplistic model of the radio coverage for each base station, but it has been universally adopted since the hexagon permits easy and manageable analysis of a cellular system. The actual radio coverage of a cell is known as the footprint and is determined from the field measurement or the propagation models. It might seem natural to choose a circle, है ना, हमको तो पहले वही लग रहा था कि सर्कल यूज करना चाहिए, बट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट वी शुड यूज द हेक्सागन instead of using the square, rectangle, circle, triangle. A cell must be designed to serve the weakest mobiles within the footprint, and these are typically located at the edge of the cell. है ना, जब आपका जो यूजर है वो सेल के एज पे भी चला जाए तब भी वो उसको प्रॉपरली प्रोपोगेट सिग्नल रिसीव होना चाहिए, इस तरीके से हमारा सेल का रीजन होना चाहिए। So hexagon has the largest area of the three. Thus, by using the hexagon geometry, the fewest number of cells can cover a geographical region, and hexagon closely approximates a circular radiation pattern, uh, which would occur for an omnidirectional base station antenna and the free space. सो कंसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज, अभी अभी हम लोग जैसे देख रहे थे डायरेक्टली फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला हो गया आपका, है ना, इन ऑर्डर टू टेसलेट टू कनेक्ट विदाउट गैप बिटवीन द एडजेसेंट सेल द ज्योमेट्री ऑफ द हेक्सागन इज सच दैट द नंबर ऑफ सेल पर क्लस्टर कैन हैव दिस वैल्यू आई स्क्वायर प्लस आई जे प्लस जे स्क्वायर, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला है कंसेप्ट ऑफ रीयूज का, कितने नंबर ऑफ सेल्स आपके लगने लगेंगे पर क्लस्टर, है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 1 2 3, यहाँ से ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस को कैलकुलेट करो और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये डायगोनल वाली को, तो आपको हर जगह पे ये सेम डिस्टेंस दिखेगा। तो ये आपका एन है कि पर क्लस्टर कितने यूज हो सकते हैं, तो 9 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितने यूज हो रहे थे, 7 यूज हो रहे थे ना, ABCDEF तक था ये,
1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये n की वैल्यू यहाँ पे 7, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे i इक्वल टू आपका आ जाएगा और 1, और j इक्वल टू मान लो 2 आ गया। तो n इज इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस आई जे प्लस जे स्क्वायर से ये 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 7। तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा एक डिस्टेंस हो गया, डायगोनल वाला आपका i है, और ये वाला पूरा 2 कंप्लीट रेडियस यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला j हो गया। यहाँ पे ये एक डिस्टेंस हो गया, ये एक डिस्टेंस हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका 1 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक एक और हो गया, तो ये 2 हो गया, ठीक है ना। ये 1, यहाँ पे ये एक डिस्टेंस, सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस 1, फिर सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस 2, है ना। ये देखो ये सेंटर है, यहाँ से सेंटर है, ये एक डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये 2 डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसको आप ले लो j, तो j की वैल्यू 2 हो गई। और फिर ये जो डायगोनल है, ये सेंटर से सेंटर कितना कवर कर रहा है, एक कवर कर रहा है, तो आई की वैल्यू 1 ले लो, और आई और जे को अप्लाई कर लो, तो कितने सेल्स होने चाहिए एक क्लस्टर में वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा यूजिंग दिस फॉर्मूला आई स्क्वायर प्लस आई जे प्लस जे स्क्वायर, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वैसे तो इसमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन कितने होंगे, ये एक यहाँ तक, ये 2, ये 3 इधर आ गया, तो आई की वैल्यू या जे की वैल्यू 3 रहते हैं, और डायगनली यहाँ पे 2 है, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो आई स्क्वायर प्लस आई जे एंड जे स्क्वायर, तो ये हो गया 4 + 6 + 9, ये आ गया 19। सो 19 ईयर्स को पूरा काउंट करोगे तो 19 का आपका एक पूरा सेल बन रहा होगा, है ना। 19 सेल का एक क्लस्टर बन रहा होगा। चैनल असाइनमेंट, किस तरीके से आप चैनल का असाइनमेंट करते हो। Channel assignment strategies can be classified as a either fixed or dynamic. The choice of the channel assignment strategy impacts the performance of the system, particularly as to how calls are managed when a mobile user is handoff from one cell to another. A variety of channel assignment strategies have been developed to achieve increasing capacity and the minimizing interference. ये देखो यहाँ पे 7 है, ये इस तरीके से हम लोग देख ही चुके हैं, ये फिक्स्ड है, इसमें फिक्स्ड है, इसमें आपका चेंज हो सकता है, कभी ये C1 बन गया, कभी ये C3 बन गया, तो इस तरीके से ये चेंज हो सकता है, तो डायनेमिक हो गया। इन ए फिक्स्ड चैनल स्ट्रेटेजी क्या होता है देख लेते हैं। इन ए फिक्स्ड चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी ईच सेल इज एलोकेटेड ए प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ वॉइस चैनल्स। Any call attempt within the cell can only be served by the unused channel in that particular cell. If all the channels in that cell are occupied, then the call is blocked. है ना। जैसे कि सभी सेल अगर ऑक्यूपाइड है तो कॉल को ब्लॉक बोलेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है ना, कि कॉल ब्लॉक कब बोलते हैं, जब सारे सेल ऑक्यूपाइड रहते हैं एंड द सब्सक्राइबर डज नॉट रिसीव सर्विस। सेवरल वेरिएशन ऑफ द फिक्स्ड असाइंड strategy exists. In one approach called the borrowing strategy, a cell is allowed to borrow channel from a neighbor cell if all its own channel are already occupied, ठीक है। तो अगर सारे सेल ऑक्यूपाइड हैं तो वो बोरो कर सकता है, और इसका टेक केयर कौन करेगा, मोबाइल स्विचिंग सेंटर, कि अगर आपने बोरो किया है तो आपका प्रॉपरली कम्युनिकेशन हो, और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बोरो कर रहे हो दूसरे सेल से चैनल को, तो ऐसा नहीं कर सकते कि उसके कॉल को डिस्कनेक्ट करके आपको बोरो कर दिए। वो अगर उसका कॉल ऑलरेडी प्रोसेस में है, वहां भी वो ब्लॉक है, तो वो आपको असाइन नहीं हो सकता। तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर supervises such borrowing procedure and ensures that the borrowing of a channel does not disrupt or interfere with any of the call in progress in the donor cell. तो डोनर सेल में ऑलरेडी कोई कन्वर्सेशन चल रहा है, कोई कॉल ऑलरेडी प्रोग्रेस में है, तो उस ड्यूरेशन पे कोई भी चैनल आपको अलॉट नहीं हो सकता। अगर वो फ्री है तभी आपको चैनल अलॉट हो सकता है, रैंडमली आपको कोई भी चैनल अलॉट हो जाए नेबरिंग वाले सेल से, वो पॉसिबल
नहीं। इन द डायनेमिक चैनल स्ट्रेटेजी क्या होता है, इन ए डायनेमिक चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी वॉइस चैनल्स आर नॉट एलोकेटेड टू द डिफरेंट सेल्स परमानेंटली, इंस्टेड ईच टाइम ए कॉल रिक्वेस्ट इज मेड। तो जब भी हम लोग को डायनेमिक चैनल, हम लोग अभी यूज जो करते हैं डायनेमिक चैनल स्ट्रेटेजी ही है, सोचो तो, है ना, क्योंकि हम लोग को जब भी कॉल करना होता है हम लोग पहले एक रिक्वेस्ट भेजते हैं बेस स्टेशन को, और अगर फ्री होता है तभी हम लोगों को उसका सिग्नल कॉल कनेक्ट हो पाता है। दीपक, जो आपको इसका पीडीएफ है वो चैनल, इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप दिया होगा, उस टेलीग्राम ग्रुप से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। द स्विच then allocates a channel to the requested cell following an algorithm that considers the likelihood of the fixture blocking within the cell, frequency of the reuse of the candidate channel, the reuse distance of the channel, and the other cost function. Accordingly, MSC allocates a given frequency if the frequency is not permanently in use and the cell or any other cell which falls within the minimum restricted distance to avoid the interference. ठीक है, तो यहाँ पे डायनेमिक चैनल असाइनमेंट रिड्यूस द लाइक्लीहुड of blocking, which increases the trunking capacity of the system. Since all the available channels in a market are accessible to all the cells, this increases the storage and the computational load of the system, but provides the advantage that the channel utilization is proper and decrease the probability of a block call. तो यहाँ पे हैंड ऑफ स्ट्रेटेजी हम लोग देख रहे हैं कि पहले आप देखोगे, जैसे आपका कोई, आप इस पर्टिकुलर सेल पे हो, है ना, जैसे आप इस बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, तो इस जब आप इस पर्टिकुलर सेल ए पे हो, नीचे वाले ब्लॉक सेल को देखना, है ना, तो यहाँ पे सेल ए पे हो, ये कार आपका ट्रैवल, आप कार से ट्रैवल कर रहे हो, तो फास्ट स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, आपका कनेक्शन जो है वो ये बेस स्टेशन 1 से हुआ है ना, बेस स्टेशन 1 से हुआ है। तो जैसे जैसे आप मूव करते जाओगे आपका कनेक्शन बेस स्टेशन 1 से वीक होता जाएगा, है ना, तो यहाँ पे देखो ये लेवल एट पॉइंट है, यहाँ पे आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, और हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड जैसे जैसे आप ये क्रॉस किए, देखो ये वाला पार्ट है जहाँ पे आप बॉर्डर पे आ गए हो, ठीक है, जहाँ पे आप एकदम बॉर्डर पे आ गए हो, जब आप एक सेल से दूसरे सेल के बॉर्डर पे आ गए हो, तो उस समय आपको एक्चुअल में क्या होना चाहिए, क्योंकि आप उस सेल को क्रॉस कर चुके हो और आप दूसरे सेल में जा रहे हो, तो आपका कनेक्शन जो है वो सेकेंड सेल के बेस स्टेशन से हो जाना चाहिए। बट अगर क्योंकि हैंड ऑफ स्ट्रेटेजी प्रॉपर नहीं है, तो इसलिए ये उसी सेल से ही कनेक्टेड है बेस स्टेशन 1 से, और एक टाइम के बाद जब वो बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा इस बेस स्टेशन 1 से, तो उसका कनेक्शन जो है वो वीक हो जाएगा फ्रॉम द बेस स्टेशन 1। ट्रंकिंग का मतलब अभी आगे देखेंगे जगताप, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रंकिंग लेटर ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिग्नल एट लेवल एट पॉइंट बी, तो जब आप पॉइंट बी पे पहुंच जाओगे तो आपका सिग्नल क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि कॉल जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, बिकॉज यू हैव मूव्ड फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल एंड देयर इज नो हैंड ऑफ between the base station 1 to base station 2. Proper handoff means what? Yes, handoff delay. Okay, handoff delay when it moves from point A to point B, जैसे ही वो बॉर्डर पे आएगा, सो यहाँ से अब आपका सिग्नल का स्ट्रेंथ देखो मिनिमम लेवल पे पहुंच गया, तो कॉल टर्मिनेट होने वाला था, तो इसीलिए जैसे ही वो इस सेकेंड सेल पे एंटर करेगा उसका कनेक्शन बेस स्टेशन 2 से बन जाएगा, तो सिग्नल का स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगा, इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, एंड देन once it will reach to the point B, it will again establish the कनेक्शन फ्रॉम द बेस स्टेशन 2, मतलब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका बन जाएगा एट दिस पॉइंट बी व्हेन इट इज ए प्रॉपर हैंड ऑफ। सो ये आपका इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर हैंड ऑफ होता है व्हेन ए मोबाइल मूव्स into a different cell while a conversation is in progress, है ना, आप बात करते करते एक सेल से दूसरे सेल में चले गए, the MSC automatically transfers the call to a new channel belonging, yeah, क्लियर हो गया। So when a mobile moves into a different cell while a conversation is in progress, the MSC automatically transfers the call to a new channel belonging to the new base station. This handoff operation not only involves a new base station but also requires the voice and the control signals to be allocated to the channels associated with the new base station. Handoff must be performed successfully and as infrequently as possible and be imperceptible to the user. In order to meet these requirements, the system designer must
specified an optimum signal level to at which to initiate a handoff. सो ये आपका आ जाएगा मार्जिन कि पी आर हैंड ऑफ माइनस पी आर अनस्टेबल, मतलब पावर हैंड ऑफ के पहले कितना होना चाहिए और मिनिमम यूजेबल पावर कितना होना चाहिए, जिससे कि सिग्नल पूरा क्या क्या ना हो, डिस्कनेक्ट ना हो, है ना, पूरा का पूरा जीरो ना हो, कॉल डिस्कनेक्ट ना हो, उसके पहले कितना मार्जिन आपको रखना पड़ेगा। इफ डेल्टा इज टू लार्ज अननेसेसरी हैंड ऑफ विच, है ना, मतलब क्या होगा कि अगर ये बहुत ज्यादा बड़ा मार्जिन हो गया तो फ्रिक्वेंटली हैंड ऑफ होता रहेगा। इसको एक बार देख लो, वंस a particular signal level is specified as the minimum usable signal for the acceptance voice quality at the base station receiver, a slightly stronger signal level is used as a threshold at which handoff is made. So this margin is given by PR handoff, power received at handoff and power received at minimum usable. अब डेल्टा की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो हैंड ऑफ जल्दी जल्दी होता जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि आप एक सेल से दूसरे सेल में जा रहे हो या आप उस पर्टिकुलर बेस स्टेशन से दूर जा रहे हो। सो इफ यू मूव अवे फ्रॉम द बेस स्टेशन, then immediately the closer base station will be assigned to you to continue with the call, but before getting the call lost you will be assigned to the new MSC new base station. तो अगर लार्ज होगा डेल्टा तो फ्रीक्वेंट पावर मार्जिन अगर ज्यादा कर देंगे तो इवन दो योर मोबाइल इज एबल टू डिटेक्ट दैट स्मॉल सिग्नल स्ट्रेंथ, अगर आप पावर लार्ज कर दोगे तो आप स्टेशन को क्या लगेगा कि आप बहुत ज्यादा दूर चले गए हो स्टेशन से और आपका प्रॉपर सिग्नल स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है, तो वो आपके नियरेस्ट बेस स्टेशन को ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरीके से क्या होगा, लोड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हैंड ऑफ आपका ऐसा अननेसेसरी हैंड ऑफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपके एमएससी को बर्डन कर देता है। Cell means a particular area. It may be a very small region like your city. Okay, your city not. Your local area like suppose few kilometers, up to few kilometers, 5 to 10 kilometers region can be called as a cell, and the complete district will have the number of cells. Okay, the complete district will have the number of cells. Like 7 cells we are using, so that will cover your particular region. Yes, exactly, Mohit Sharma. That handoff delay, if it is greater, then the call will be terminated, because it is not allowing, the delay is too much high that you have not assigned a new base station to continue with the call. In deciding when to hand off, it is important to ensure that the drop in the measured signal level is not due to the momentary fading, and that the that the mobile is moving away from the serving base station. In order to ensure that this base station, uh, in order to ensure this, the base station monitors the signal level for a certain period before a handoff is initiated. The length of the time needed to decide if a handoff is necessary depends on the speed at which the vehicle is moving. So if there is a fast moving vehicle, then it will happen. The time, see, the time over which a call may be maintained within a cell without handoff is known as dwell time. So before the handoff, that means you are using the same base station, that call is connected without handoff is dwell time. This is not important. Yeah. So in the second generation system that uses the digital TDMA technology, handoff decisions are mobile assisted. In a mobile assisted handoff, that is MAHO, every mobile station measures the received power from the surrounding base station and continually reports the result of these measurements to the serving base station.
and a handoff is initiated when the power received from the base station of a neighboring cell begins to exceed the power level from the current base station. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके सेल पे जो बेस स्टेशन है, अगर आप उससे ज्यादा पावर रिसीव कर रहे हो, इसका मतलब आप उस पर्टिकुलर बेस स्टेशन के पास हो। लेकिन अगर आपके मोबाइल पे जो आपको सिग्नल मिल रहा है वो आपके नियर बेस मतलब दूसरे सेल के बेस स्टेशन से ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब आप उस बेस स्टेशन के ज्यादा क्लोज हो। जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर सेल के बाउंड्री पे हो, तो देयर इज ए चांस कि आपको जो आपका एक्चुअल सेल है उसके बेस स्टेशन से कम पावर मिले, और जो नेबर वाला जो बेस स्टेशन है उसके सेल से उसके बेस स्टेशन से ज्यादा पावर मिले, तो वो आपका हैंड ऑफ इनिशिएट कर देगा। ठीक है, तो पावर एक्सीड जिस बेस स्टेशन से ज्यादा पावर मिलेगा उस बेस स्टेशन से आपका कॉल कनेक्ट हो जाएगा। The Maho method enables the call to be handed over between the base station at a much faster rate than the first generation analog। ये फर्स्ट जनरेशन एनालॉग था जहाँ पे हम लोग उसको पहले डिटेक्ट करते हैं और फिर उसको सुपरवाइज करते हैं एमएससी के थ्रू। तो इसमें कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं होता फर्स्ट जनरेशन में, बट सेकंड जनरेशन में सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है, मोबाइल असिस्टेड हैंड ऑफ बोलते हैं इसको। Hmm. Different systems have the different policies and methods for managing handoff requests. Some system handle handoff requests in the same way they handle the originating calls. In the system, the probability that a handoff request will not be served by a new base station is equal to the blocking probability of the incoming calls. To improve the quality of the service as perceived by the user, the various methods have been devised to prioritize handoff request over the call initiation process when allocating voice channels. Prioritizing handoff. One method for giving the priority to handoff is called the guard channel concept, and where a fraction of the total available channel in the cell is reversed exclusively for handoff requests from ongoing calls which may be handed off into the cells. This method has the disadvantage of reducing the total carried traffic as fewer channels are allocating to the originating calls. Guard channels, however, offer efficient spectrum utilization when the dynamic channel assignment strategies, which minimizes the number of required guard channels by efficient demand-based allocation. Queuing of handoff request is another method to decrease the probability of forced termination of a call due to the available lag channels. A queuing of a handoff is possible since there is a finite time interval time the received between the time received signal level drops below the handoff threshold and the time the call is terminated due to the inefficient signal levels. It should be noted that queuing does not guarantee a zero probability of forced termination, since the large delay will cause the received signal level to drop below the minimum required level to maintain communication and hence lead to forced termination. High-speed vehicles pass through the coverage region on a cell within a matter of seconds, whereas the pedestrian user may never need a handoff during a call. है ना, क्योंकि आप कार से जाओगे तो ज्यादा चांस है कि आप सेल को क्रॉस करो, बट पैदल जा रहे होगे तो वो आप सेल को क्रॉस करो इसके चांसेस कम है। अगर आप घंटों तक बात नहीं कर रहे हो या आपका घर जो है वो एकदम सेल के बाउंड्री पे नहीं है, तब आपके चांसेस बहुत कम है कि आप एक सेल से दूसरे सेल पे जाओ, है ना। The MSC can quickly become burden if the higher speed users are constantly being passed between very small cells. By using the different antenna heights and the different power levels, it is possible to provide large and small cells which is relocated at the single location. This technique is called the umbrella cell technique. ये umbrella cell approach is important है ना, umbrella cell approach is important। यहाँ पे क्या होता है, ये देखो, जैसे कि आप ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन में ये वाला मेथड आपका यूज होता है, जो अम्ब्रेला अप्रोच है ये ट्रेन में यूज होता है। जैसे एक हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा एंटीना लगा देते हैं लार्ज हाइट का, तो ये जो लार्ज हाइट का एंटीना है ये ज्यादा रीजन को कवर करता है, ये वाले पूरे एरिया को कवर करता है। तो इस रीजन पे जब आप ट्रेन से बहुत ही फास्टली मूव होते रहते हो तो ये इसी
पर्टिकुलर बेस स्टेशन से आपका कनेक्टेड रहता है और उस ड्यूरेशन पे जो भी आप कॉल करते हो वो इसी एंटीना से आपको सिग्नल मिलता है और ट्रांसमिट होता है ना। और जब आप वो एक जो लोकल ये जो छोटे छोटे हाइट के एंटीनाज हैं वो आपके उस पर्टिकुलर रीजन के कॉल को हैंडल करते हैं जहाँ पे नॉर्मल पेडेस्ट्रियन यूजर हैं जो उस एरिया पे प्लेस्ड है। ठीक है, द अम्ब्रेला सेल अप्रोच इंश्योर्स दैट द नंबर ऑफ हैंड ऑफ इज मिनिमाइज, क्योंकि ज्यादा हैंड ऑफ होगा तो जो एमएससी है उसको बर्डन होगा, है ना, क्योंकि उसको मैनेज करना पड़ता है, कॉल को ट्रांसफर करना पड़ता है, बीएससी से कनेक्ट करना पड़ता है, तो बहुत सारा, और कोई भी एलोकेट का कॉल ड्रॉप ना हो और बिना कॉल ड्रॉप हुए आपका कॉल एक अवेलेबल चैनल से कनेक्ट हो, तो देर इज अ लॉट ऑफ वर्क फॉर एमएससी इफ फ्रीक्वेंट हैंड ऑफ प्रोग्रेस। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डिफरेंट डिफरेंट साइज का हम लोग एंटीना लगा देते हैं और इसको हम लोग एम्ब्रेला सेल अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, तो इफ ए हायर स्पीड यूजर इन द लार्ज umbrella cell is approaching, then the base station and its velocity is rapidly decreasing, then the base station may decide to hand the user into the co-located microcells without MSC intervention। तो MSC से बिना कांटेक्ट किए वो आपका इस पर्टिकुलर एंटीना से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, सेल ड्रैगिंग क्या होता है, सेल ड्रैगिंग रिजल्ट्स फ्रॉम द पेडेस्ट्रियन यूजर दैट प्रोवाइड ए वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल टू द बेस स्टेशन। सच ए सिचुएशन ऑकर इन द अर्बन एनवायरनमेंट व्हेन देयर इज अ लाइन ऑफ साइट रेडियो path between the subscriber and the base station। As the user travels away from the base station at a very slow speed, the average signal strength does not decay rapidly. This creates a potential interference and the traffic management problem, since the user has the meanwhile traveled deep within a neighboring cell. To solve the cell dragging problem, handoff thresholds and the radio coverage parameter must be adjusted carefully। एनीवेज इसकी बात हम नहीं करते हैं, ये सब प्रैक्टिकल हैंड ऑफ में वही अप्रोच आ गया ये आपका, है ना। एबिलिटी टू सेलेक्ट द बिटवीन द इंस्टेंटेनियस रिसीव सिग्नल फ्रॉम द वैरायटी एंड ऑफ अ बेस स्टेशन इज कॉल्ड द सॉफ्ट हैंड ऑफ। ये देख लो, सॉफ्ट हैंड ऑफ और हार्ड हैंड ऑफ देख लो। द एबिलिटी टू सेलेक्ट द बिटवीन द इंस्टेंटेनियस रिसीव सिग्नल फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ बेस स्टेशन इज कॉल्ड द सॉफ्ट हैंड ऑफ, and channelize the wireless system that assign the different radio channels during a handoff is called the hard handoff। क्योंकि हार्ड हैंड ऑफ एंड द सॉफ्ट हैंड ऑफ ये आपको ना पूछता है, ठीक है, ये आपको ना एग्जाम में डायरेक्टली डेफिनेशन के थ्रू पूछ लेता है, तो इसको आप एक बार देख लो। ठीक है, तो मुझे बताओ कि ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, है ना, हाँ, तो इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का पार्ट है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है ना। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में आप ईएमएफटी का पढ़े ही होगे गेट के लिए। ठीक है, तो ईएमएफटी गेट में आपने पढ़ा ही होगा इसको। ठीक है, अब इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, देखो मैं बता रहा हूँ, है ना, आपने पढ़ा होगा, है ना, रिवीजन क्योंकि आप कर रहे हो, नेक्स्ट इस 1 वीक के अंदर ही आपका एग्जाम है, तो आपको एटेन्यूएशन पढ़ना है ना, डिस्पर्शन पढ़ना है। ठीक है, ये दो टॉपिक आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है जिससे आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, है ना। यहाँ से आपको 101% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि एटेन्यूएशन किस किस रीजन से होता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में, और डिस्पर्शन किस किस रीजन से होता है, मटेरियल डिस्पर्शन, वेव गाइड डिस्पर्शन, ठीक है, पोलराइजेशन डिस्पर्शन, ठीक है, और माइक्रो बेंडिंग, मैक्रो बेंडिंग, स्कैटरिंग लॉसेस, तो ये सब एटेन्यूएशन के पार्ट आ जाते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। ठीक है, माइक्रो बेंडिंग एंड मैक्रो बेंडिंग। ठीक है, ये जो आपका, यस अनन्या रॉय, सिग्नल सेल सिस्टम मैं लूंगा आपका भाई ऐप में, बायजूस एग्जाम प्रेप में सिग्नल सेल सिस्टम मैं लूंगा। द क्लास इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 27, और जो सेकंड हमारा सब्जेक्ट होगा कम्युनिकेशन,
वो भी मैं लूंगा। और ईएमएफटी अभी वो डिसाइड नहीं है, ईएमएफटी का मे बी आपको पता चल जाएगा जब सिग्नल एंड सिस्टम प्रोग्रेस होता रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ईएमएफटी मैं भी ले सकता हूँ। और हमारे साथ राकेश सर भी हैं, तो राकेश सर हम में से या मेरे में से जो भी जैसे भी शेड्यूल होगा, जैसे जिसका फ्री स्लॉट होगा, हम दोनों में से कोई एक ले लेगा। ठीक है। डिस्पर्शन में मैं आपको बताया वेव गाइड डिस्पर्शन होता है। मटेरियल डिस्पर्शन होता है। ठीक है, तो ये सब पोलराइजेशन डिस्पर्शन होता है। तो ये सब डिस्पर्शन के पार्ट है, तो यहाँ से आपको 101% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो डोंट मिस दिस, डोंट लीव दिस टॉपिक्स बिफोर बिफोर गोइंग इनटू द ईएमएफटी, बिफोर गोइंग इनटू द ईएससी प्रीलिम्स, है ना। ईएससी प्रीलिम्स में जाने से पहले इलेक्ट्रिकल मशीन आशु जांगड़ा सर लेंगे, डेफिनेटली आशु सर लेंगे। मशीन आशु जांगड़ा सर लेंगे, या फिर आशुतोष सक्सेना सर, दोनों में से अगेन कोई एक फैकल्टी जो भी उस टाइम पे आपके लिए अवेलेबल होगा। दोनों ही बेस्ट फैकल्टी हैं, आपको मिलेंगे। तो बाकी एग्जाम प्रेप में आपको सभी चीजें बहुत सटीक मिलेगी, हर चीजें आपको स्पेसिफिक मिलेगी, है ना। देखो स्पेसिफिक इसलिए क्योंकि देखो आपको 2000 घंटे भी पढ़ा सकते हैं हम। वी कैन टीच यू कम्युनिकेशन, ईएमएफटी और अदर सब्जेक्ट्स मोर देन 200 hours. There is no point, there is no doubt on that. But what will happen if you will revise it? When I will teach any subject 200 hours, and if every faculty teaches you 200 hours, then what will happen? When you are going for the revision, can you revise all the topic in that way? Obviously not. So this is not about the learning deep into the every topic. This is about the gate exam, and in the gate examination, this is not necessary to solve all the question to get the good rank, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक में आपको बहुत ज्यादा डेप्थ तक जाना है, कौन से टॉपिक को लीव करना है, किस टॉपिक को सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ना है ना। तो ये सारी चीजें आपको एक सटीक तरीके से बायजूस एग्जाम प्रेप में बताया जाता है, क्योंकि सारे फैकल्टी यहाँ पे मोर देन 10 ईयर एक्सपीरियंस वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी को आइडिया है और सभी लोगों ने बहुत अच्छे से एग्जाम को क्रैक किया है। एक एग्जाम नहीं, मल्टीपल एग्जाम्स को क्रैक किया है, और गेट को ही मल्टीपल टाइम भी क्रैक किया है। तो बहुत ही अच्छे से आइडिया है कि व्हाट शुड बी द करेक्ट वे टू learn the subject according to the gate point of view, according to the ESE point of view. We are not talking about the knowledge point of view. Obviously, knowledge point of view will be different, but according to the gate point of view, according to the ESE point of view, up to how much depth you have to go, that you will learn in the BYJU'S exam prep only. Okay, so thank you for watching this session. There are two topics which are left, which is optical communication. I told you what are the different topics that you have to study. And the second most important is the computer network. So computer network also, this is a very huge syllabus for the computer network. So that is what we are not covering it here. So I have covered the three topics for you. That is the satellite communication, cellular communication, and microwave communication. And these are having very good weightage. So let's meet on the analysis of the ESE exam, and that will be on the Sunday. So all the very best for your exam. Thank you so much. Thank you guys. So don't miss that particular sessions that still are running. So the sessions will be coming for you for revision purpose. So we will meet with the analysis. You will see that whatever we have studied in the last 2 hours, you are going to get many questions from these 2 hours. Okay. Thank you.